Hello students, in today's class we will discuss the land, soil, and after this one water. We came on the point of natural vegetation and wildlife. We discussed that types of land and then distribution of land, then the conservation of land, after that soil, types of soils, conservation of soil, and then water and water conservation. Now natural vegetation, as our topic is natural vegetation. Natural means natural, that not made by human beings, okay, automatically. And vegetation here, and wildlife, two word are here, vegetation and wildlife. Vegetation is related to trees and plants, so all the natural trees and plants. And wildlife is here related to all types of animals that lives on the earth. So what types of vegetation and wildlife, what types of plants and trees are found, and what types of animals and other etc are found on the earth. So before we get started, we should know that where this vegetation and wildlife can exist, or plants can grow easily more and more. So here, as you can see, a diagram is here. Three parts are there. Sphere, hydrosphere is related to water, that part of water. Lithosphere, this sphere is part of, or we can say that this sphere is stand with earth or land. And atmosphere, this sphere is stand with air. So these all three, hydrosphere, water, lithosphere, land, and atmosphere, air. So every sphere have its own importance, but all these three sphere when combined, then it made biosphere. Listen carefully. Hydrosphere is related to water. Hydrosphere is related to water. Lithosphere, land, and atmosphere, air. Every sphere cannot exist or cannot form the life. Like only water cannot form the life, only land cannot form the life, and only atmosphere cannot form the life. When these three sphere interact each other, then it's called biosphere, and that biosphere is the sphere which forms the life. So here biosphere. Biosphere is a zone where all the three spheres interact. Biosphere is a zone where all three, like here, some part of hydrosphere, some of lithosphere, some atmosphere, these all three spheres are interact each other. That zone is called biosphere. Now here, what is the importance of biosphere? Because of the biosphere, life is exist on the earth. Otherwise, without biosphere, life cannot exist on the earth. Life forms exist in this zone. So I told you that life form exists in this zone only. Not here, not here, not here, but only where all three spheres interact each other and make biosphere. This life supporting system known as the ecosystem. Remember this one, ecosystem. This life supporting system, and which system? Biosphere, where hydrosphere, lithosphere, and atmosphere interact each other. That
system is called ecosystem because it support life. It support life. Now, how it support life and what is the importance? Importance of vegetation and wildlife. Importance of vegetation and wildlife. Now, what is the importance of vegetation first and then wildlife? So, first, vegetation. Plant provide us timber, लकड़ी, give shelter to animals. Animals को shelter देते हैं. Produce oxygen to breathe. That we breathe oxygen gas that produced by plants. Storage of groundwater and it make important place to store the groundwater. They give us, now what they give us, that's the they provide us first timber that we cut or we use in our furniture and that we cut in forest. Give shelter to animals. Animals को shelter देते हैं and produce oxygen to breathe and storage of groundwater. They help us in storage of groundwater. Now they give us fruits. Latex. Latex is the thing that we can call it rubber. Latex, turpentine oil, medicine, etc. So with the plant they help us with fruits, latex, turpentine oils, medicine. They give us shelter. They give animals shelter. They produce oxygen. They help in storage of groundwater. They produce or provide us timber. Now, this is the importance of vegetation and what we grant by vegetation, this one. And next one is wildlife provide us milk, meat, hides, honey and wool. Now with the wildlife we got from the wildlife here, wildlife means animal. Okay, from the animal what we got? एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, हाइड्स. हाइड्स क्या होती है? हाइड्स जिसको हम कह सकते हैं स्किन. हाइड्स, हनी एंड वूल. सो दीज ऑल आर provided by wildlife and they help us. Now this is important, they help us in pollination. Now what is pollination? Pollination वो एक्ट होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो जो सीड होती है किसी भी प्लांट की, उस सीड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स को ग्रो लगाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एनिमल्स नहीं कर सकते. बट जब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग, सो तब प्लांटिंग कैसे होती थी? तो वो हेल्प होती थी पॉलिनेशन से. नाउ दे हेल्प अस इन पॉलिनेशन एंड एक्ट एज अ डीकंपोजर. दे आल्सो एक्ट एज अ डीकंपोजर. वो डीकंपोजर की तरह भी एक्ट करते हैं. उससे क्या होता है? उससे इनको न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, इसको वेजिटेशन में हेल्प मिलती है. ओके, both plays a very important role in balancing ecosystem. Now both wildlife and vegetation, plant and animals both play very balancing. To make balance in the ecosystem, they play very important role. For example, vulture is a creature. आपने गिद्ध, vulture means गिद्ध. पहले बहुत होते थे, but nowadays we rarely seen any vulture. Scavenger, vulture को scavenger भी कहते हैं. Scavenger means which creature depends on the dead animal's body or etc. डेड एनिमल्स बॉडी की जो मीट वगैरह उसको खाने में जो वो उसको साफ करने में जो हेल्प करते हैं उनको कहते हैं स्कैवेंजर. सो वल्चर एक स्कैवेंजर भी है.
Now this creature is now on the shore of एंड, वो एंड की शोर पर ही है. हाउ? बिकॉज ऑफ डाइंग ऑफ किडनी फेलियर. नाउ डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, हाउ इट इज पॉसिबल? किडनी फेलियर कैसे हुआ इनका? अब इनके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? फीडिंग लाइव स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफेनिक पेन किलर. नाउ उनका जो लाइव स्टॉक है ये फीड करता है लाइव स्टॉक पे. अब लाइव स्टॉक को ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल, टेक एनी एनिमल. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कैमल, यू कैन टेक शेप, goat. For example, you can take goat. Now we have goat. Now goat injured by leg, or his one leg is broken. One leg of our goat is broken. Now what we do? We will go to the doctor, and doctor will give this medicine for relief from the pain. So doctor will give this formula or this medicine, diclofenac. Now with the diclofenac, now जो ट्रीट करते हैं ह्यूमंस बीइंग को, वैसे वैसे डॉक्टर्स एनिमल्स को भी ट्रीट करते हैं. तो पेन किलर के लिए जब उसको देंगे गॉड को, तो वो उसके मीट में भी साथ में होगा, और वही जब उसके बॉडी के अंदर रहेगा, और वो बॉडी के अंदर वल्चर के द्वारा जब वो फीडिंग की जाती है तो वो उसके बॉडी में आ जाता है, और उससे वो एंड हो रहे हैं. सो दैट इज द रीजन वल्चर इज सोर एट द एंड. So after that natural vegetation and wildlife, let's talk about more about vegetation. Distribution of vegetation. Now distribution of natural vegetation in the world, we divide that type of distribution in 4 types. First one is forest. Now about the forest, you can see that density of vegetation is more than anywhere. कहीं और से ज्यादा उसकी density होगी. And one more thing, where the forest is there, then the heavy rainfall will be there. Rainfall occurs because of the vegetation. So the speciality of the forest are the area of heavy rainfall. First thing, there will be heavy rainfall, then use trees and make thrive. There will be use trees, not short, but use very big trees will be there, and they also make thrive. And that heavy rainfall and the temperature, atmosphere, that will help to make thrive. Thrive means grow well, very well. So that is the speciality or features of the forest type of vegetation. Where one more thing, abundance of vegetation and water supply. Abundant means in large quantity. So there will be a large density, will be more than anything anywhere else, और कहीं से भी ज्यादा उसकी वेजिटेशन जो अबेंडेंट मिलेगा, और वाटर सप्लाई भी बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. सो दैट इज द स्पेशलिटी और फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन. नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड. एज यू कैन सी फाइंड ग्रासलैंड्स ऑन द अर्थ वेयर द मॉइस्चर एंड रेनफॉल. हियर द मॉइस्चर इज very important for the grassland. Moisture will be more than anything else and anywhere else. And rainfall, about rainfall, there the rainfall in quantity is less than forest area. Forest area से यहाँ की जो rainfall है वो कम होगी, but it is not too less that grass cannot grow well.
Next, size and density of trees also decrease. Now, size, here we see that used trees are available, but here the size and density, they grow well, but here they do not get abundant water supply, so they do not grow well, and the size and density of that type of trees decrease here in the grassland. Now, rainfall, about I told you that rainfall, short stem tree and grasses, rainfall होती है वो यहाँ पर short होगी, so the trees will and grass वो भी उनकी density भी कम होगी. Next one, scrubs. Now scrubs जो होते हैं scrubs में dry areas of low rainfall. First feature is for scrubs, that area will be dry and the rainfall is very low than anywhere else. Now, as we can see in our areas, in our desert areas, it is dry and low rainfall is present here. So, the scrubs or shrubs will be thorny and waxy leaves. The deep roots will be very deep and leaves will be there waxy. जो इनकी जो leaves होती है ना वो भी waxy means थोड़ी सी ऐसी मोटी होती है दूसरों से, क्योंकि फिर यहाँ पर जो इवापोरेशन होता है वाटर का वो उससे कम होता है waxy leaves से. सो यहाँ पर ये हेल्प करती है, और इनकी जो रूट होती है वो वेरी डीप होती है, जिससे कि वो जहाँ पर वाटर की जो शॉर्टेज है उसको वो पूरा करती है अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर से. नेक्स्ट वन इज टुंड्रा. टुंड्रा फॉरेस्ट और वेजिटेशन फाउंड ऑन द पोलर रीजन. जो पोलर रीजन है अर्थ का, जो पोल की साइड में, वहां पर वी कैन फाउंड इट इजीली और मोस्टली फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन्स. नाउ इन दैट मोजेस एंड लाइकन्स आर इसको कहते हैं हिंदी में काई एंड शेवाक. काई एंड शेवाक. नाउ Moses will present there where the some water is available, and lichens are that plant that grow on the dry rock और stone. dry rock और stone पे जो होता है वो lichens होता है, and काई जहां पर थोड़ा सा भूरा सा ऐसा होता है वो उसको कहते हैं lichens, and Moses जो वाटर में होता है ग्रीन सा प्लांट वो होता है मोजेस, एंड लाइकन्स जो ट्रीज पे या रॉक्स पे होगा, लेकिन उसका कलर होगा ब्राउन, येलो. नाउ इन द फॉरेस्ट देयर आर two types of forest are there, evergreen and deciduous. Now in the evergreen the feature is the trees do not shed their leaves ever. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसमें जो ट्रीज होते हैं उनकी स्पेशलिटी यही होती है that they do not shed their leaves and ever. वो कभी भी अपनी जो ट्रीज है वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, उनके लीव्स कभी भी टूटते नहीं है. जैसे पतझड़ जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होता है. एंड डेसिडस शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. और डेसिडस जो फॉरेस्ट होते हैं उनके जो ट्रीज होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर सीजन में लीव्स को शेड करते हैं. नाउ डेसिडस, अब जो एवरग्रीन है वो तो कहीं कहीं पर मिलता है. अब डेसिडस कहाँ पर फाउंड होते हैं? डेसिडस जो अर्थ को देखे ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न,
we will see where it can found. Now here we will make some symbol. So tropical found here, tropical deciduous forest found here. Okay, between the equator and the Cancer and Capricorn. But after this one, in the both hemisphere, this will found temperate deciduous. This type of forest found it here. जो एरिया की बात करें ना कि कहां पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं, तो जो ट्रॉपिकल मिलेंगे वो यहाँ पर एंड टेम्परेट मिलेंगे वो यहाँ पर. सो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. आपको ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड later we will see you in the next class. Hope you enjoyed this class.